Hi guys, welcome back to the channel and this is your host Dhruv. I'm from Anant Realties and today I'm going to present to you a very beautiful 360 square yards builder floor here in Greenwood City A block. This is entirely gated. Do have a look, and the roads here are made up of an interlockable tiles. So a private colony and it's properly gated, has its own power backup, and this is something which is very unique. Look at the facade. It's such a magnificent facade and this is very low maintenance. As you can see, there are elements which is being used which has lifetime warranty and doesn't require paint and repairs throughout the year. So now let's go for the entire walkthrough. Well, this is the most expansive 360 square yards builder floor that I've seen so far. This is in a Greenwood City locality and this is the A block, which is entirely gated. Now, I'm going to give you a tour of this beautiful 360 square yards builder floor, but उससे पहले मुझे आपको लेआउट समझाना है। लेआउट समझना घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आपको लेआउट ही नहीं पसंद आया तो आप उसमें मार्बल लगा हुआ है, वुडन फिनिश लगी हुई है, टाइल्स लगी हुई है, उसका कोई मायने नहीं रखता। अब लेआउट समझ जाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। Now, I'll just give you a brief example. On my left is the entrance, which is east facing. The plot is northeast facing, so it's Vastu compliant. On my right is the powder washroom. On my right and my left are the two bedrooms. In the center, there is a kitchen which comes with a fluted glass panel, and over here is the powder washroom जो मैं आपको बता चुका हूँ. And then again on my left there is one room which is over here, and then again besides the mandir room there is one more room here as well. So before we start the walkthrough, मुझे आपको layout समझाना बहुत important था. So now let's start with this beautiful living room, and this is the formal drawing space of this 360 square yards builder floor. Now let me show you what the builder has used. So he has used a mix of marbles, veneers, tiles and multiple other things that I'll be covering in the walkthrough. Now, for an instance, this is a Satwario marble which has been done with a CNC finish, and here you can place your L-shaped sofas, a nice rug and two accent chairs. Now, let's start with the walkthrough of the rooms, but before that, I'm going to show to you a very nice mandir space here which has been given by the builder in a 360 square yards. Pardon for the mess, थोड़ा सा मैं side कर देता हूँ इसको. Now, all the rooms, the entire kitchen and all the bedrooms, your common areas have been finished in a Italian marble finish. Now this is a Botticino marble finish, and this is a very nice bed back side wall. This has been covered in a nice POP finish. This has been hand carved and this requires a lot of skill. This is your bed placement, that's your TV placement, and as I said, इस यहाँ पे बिल्डर्स ने एलिमेंट्स यूज किए हैं. अब ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है मैं आपको बताता हूँ. इतना थिक ब्लॉक बोर्ड का डोर दिया है, एंड दिस वेनियर इन स्पेसिफिक इज कॉल्ड अ सुकुपीरा वेनियर. दिस इज अ जापानीज वेनियर, एंड यू हैव डोर सेट हैंडल इन गोल्डन ब्रोंज फिनिश. सो द एलिमेंट्स दैट ही हैज यूज्ड आर वेरी प्रीमियम, एंड इसके ऊपर बिल्डर ने काफ़ी खर्चा किया है. नाउ ऑन माई लेफ्ट दीज आर थ्री बिग वार्डरोब्स. They are in glass finish and it's a reflective glass. It acts as a full length mirror as well, and we have our designer backlit mirror here as well. QO की हमारी bathware और sanitary wear आ जाता है. So and कहीं कहीं पे हमको Duravet की भी bathware और sanitary wear दिया हुआ है. Now let's फटाफट से go into the second bedroom which is also on the front hand side. Now this is a bed back area. अब ये बेड बैक ना ऑलरेडी लेदराइट का बनाया हुआ है, पफ्ड अप है, तो आपको सिर्फ बेड का बेस लाना है और अपने साइड टेबल्स लाने हैं. बेड बैक साइड आपको बनाने की जरूरत नहीं है. फटाफट से आई वुड लाइक टू शो टू यू द टू वार्डरोब्स हियर, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव आवर वॉशरूम व्हिच इज फिनिश्ड इन अ टाइल, बट इट लुक्स लाइक अ मार्बल फिनिश टाइल, और नीचे हमको दिया हुआ है एंटी स्किड टाइल्स. नाउ क्विकली I'll show you the powder washroom. Now this is something which is very unique and has been covered in a Italian marble. It is black in tone, and this entire marble finish has been done, and some groovings that have also been done. It looks very premium. अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे Duravet के हमको बाथवेयर और सैनिटरी वेयर दिया है,
and this is also finished in a proper Italian marble, and this is a tap by Kohler. So this sums up the entire powder washroom, and handing it back to my cameraman. Now this same feature wall has been given here, Satvario marble, and again CNC finish. It's a very expensive work. Now this is a TV placement area, या फिर आप इसको डाइनिंग एरिया भी बना सकते हो. यहाँ पे आप फैमिली लाउंज बना के काउच प्लेसमेंट करके यहाँ पे आप टीवी भी लगा सकते हो. एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फॉल सीलिंग, इट्स वेरी वेरी एवरग्रीन एंड वेरी ये ऐसा डिज़ाइन है जो कि कभी भी फेड आउट नहीं होगा. एंड इसमें सीलिंग हाइट भी आपकी ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रही है. इट्स अ वेरी लो फॉल सीलिंग, तो आपको सीलिंग हाइट काफ़ी एक्सपेंसिव दिखेगी. नाउ दिस इज़ द थर्ड बेडरूम, एंड there are two bedrooms at the backhand side, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. This is one of them which is on the backhand side. This is a very very grand bedroom. It's squarish shaped as you can see. यहाँ पे हमको यहाँ पे wooden panels मिलने वाले हैं. This is the bed back side. It has a nice backlit wall as well. Now let me show to you the very best part here. Now this is the washroom of this master bedroom. Have a look at this washroom. This is completely finished in Italian marble. This is panda stone, panda Italian marble. Groovings have been done. Very nice moldings have been done. Now this is the highlight. This is a very nice bathtub here. Acts as a jacuzzi as well. We have a nice shower cubicle space. This is a nice semi-length mirror. Do give a like, subscribe to the channel, comment your views कि आपको फ्लोर कैसा लगा है. Now talking about the storage space, which is very very important. These are wardrobe shutters. अब these are in full length. ये wardrobe shutter है, एक ये है और ये है और एक दरवाजे के पीछे है, तो हमको काफ़ी स्पेस मिल जाती है बहुत easily इधर. Now I'll hand it back to the cameraman. And now फटाफट से we'll go and explore the kitchen area. Pardon for the noises, थोड़ा सा finishing का काम चल रहा है बाकी floors पे, because this is the sample floor. It's on the second floor. Availability और asking मैं आपको end में बताऊंगा. Now this is a kitchen which has been finished in a PU tone. ये laminate नहीं है, ये PU finish है. ऊपर हमको quartz मिल जाता है. Quartz का हमारा slab हो जाता है. Glen के appliances which includes hob, chimney. Oven and microwave अभी placed नहीं है, so I'm not sure if he's gonna provide. But AC यहाँ पे हमको 5-star Daikin का AC दिया हुआ है. And the best part about is कि ये kitchen close हो जाता है. Close kitchen देना एक बहुत अच्छी बात होती है, because घर में झोंके लगते हैं, एक weird smell भी आ जाती है खाने की जो कि पूरे घर में फैल जाती है. Now this bathroom here is very very unique. Anti-skid tiles here. A very nice marble looking tile on the walls, anti-skid on the flooring, a very nice bathroom space here. And also now let's take a tour of this bedroom, which is also very lit up, because अभी इस टाइम पे देखो अभी 2 बज रहे हैं और यहाँ पे कितनी सनलाइट आ रही है. अगर मैं लाइट्स ना भी जलाऊँ ना तो भी यहाँ पे हमको बहुत एक स्पेस मिल जाती है, एक्सपेंसिव स्पेस मिल जाती है. नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर बेड प्लेसमेंट. ये बेड बैक साइड की वॉल है, ये वॉलपेपर फिनिश में किया हुआ है, सॉफ्ट वॉल है और उसको यहाँ पे बिल्डर ने वॉलपेपर में फिनिश किया अलॉन्ग विद कोव लाइटिंग्स एट द बैक साइड. नाउ दिस इंटायर वॉल विच ऑल्सो एक्ट्स एज अ वार्डरोब स्पेस. यहाँ पे बिल्डर ने बहुत स्मार्टली प्ले किया है और यहाँ पे हमको वार्डरोब्स इंटरनली भी दी है, इंटरनली वार्डरोब्स दी है. और यहाँ पे हमको सेम सुकुपीरा वेनियर में यहाँ पे हमको शेल्व्स मिल जाते हैं, सो दैट यू कैन प्लेस योर परफ्यूम्स, यू कैन प्लेस योर शो पीसेस. सो दैट्स व्हाट द एंटायर प्रैक्टिकलिटी इज ऑल अबाउट. नाउ एज यू कैन सी दिस हैज VRV air conditionings in the common areas, and the rooms have split ACs inside of it. I hope you loved the walkthrough. Now if we talk about the availability and the asking, we have only the second floor available, which is priced at 6 CR. हाँ जी, 6 CR में greenwood, gated, interlockable tiles, premium area, walking distance to Huda City Center metro station, literally 200 to 300 400 meters away from the NH48. You have very nice approachability, and even you are very close to the golf course road. जो सेक्टर 45 का एरिया पड़ता है, दैट इज एक्चुअल हार्ट ऑफ गुड़गांव. जो लोग बोलते हैं ना हार्ट ऑफ गुड़गांव, ये हार्ट ऑफ गुड़गांव है.
I hope you loved the walkthrough. See you in the next one. This is Dhruv Arora signing off.